Jai Shri Ram, welcome all of you all for our weekly Ramayanam class. So every Wednesday we are reading from the Valmiki Ramayana, shloka by shloka, for having a proper, deeper insight from the Valmiki Ramayana. So we are now starting the Sarga 20th chapter of the Bal Kand. So the last chapter, does anyone remember what was discussed in the last chapter? 19th chapter. हरे कृष्ण प्रभु जी। Yes, Prabhu. विश्वामित्र महाराज दशरथ से मिलते हैं और दशरथ महाराज उनकी स्तुति करते हैं। Right. और वो रामचंद्र जी को उनसे यानी मांगने के लिए आते हैं। तो उसके यानी वही किसके लिए मांगते हैं? जो राक्षस उनको उनके यज्ञ के टाइम परेशान करते हैं, तो उनका so he wanted Rama and he specifically asking for Rama, no one else. I want your eldest son Rama to come and solve my problem. Every time I am starting the yajna and the yajna is being spoiled by the Rakshasas. And since they are in the vow of silence and what do you say, they should not, you cannot curse when the yajna is going on. That time, jab ye gadbad hota hai, they are feeling very, very. So, taking these things into consideration, Dasharatha Maharaj has been requested by Vishwamitra Muni. But when Vishwamitra Muni entered the palace, that time Dasharatha Maharaj started saying big words. Arey, you have come, it's like, great blessings on me. आप जो यहाँ पधारे हो बहुत बड़ी बात है. And then he is saying, whatever you ask for, please tell me without hesitation. I will give you all. Promise, I promise that I will fulfill your desires. But जैसे ही उन्होंने बोला कि भाई आपका बेटा दे दो, now we will see how he reacts and how he is spellbound. Yes, Damini Mataji, request you to start reading from Sarga 20. First words. The king, on hearing what sage Vishwamitra spoke, became unconscious for a short span. After gaining consciousness, the king spoke. King Dasharatha said, "My lotus-eyed son Rama is less than 16 years old. I do not see any ability in him to fight a war with the demons." Okay. King Dasharatha. 1 minute. So first, when this point was proposed by Vishwamitra, कि भाई आपको आपका बेटा, मुझे आपका बेटा चाहिए, I want your son, whom I will take him to the forest to kill the Rakshasas. तो पहला चीज तो he fell unconscious. Dasharatha Maharaj could not bear that thought that he is going to be separated from Lord Rama. तो तुरंत बेहोश होकर गिर गए. Then he gained consciousness and then he started pleading. And how is pleading? He is saying, my lotus-eyed son, Ramo Rajiva Lochana. Very important word in this sloka. Ramo Rajiva Lochana. So what is this meaning? Ramo Rajiva Lochana. My son Rama is like a lotus. Literal meaning is lotus-eyed. But इसका गहरा मतलब जैसे कहते हैं कि राक्षस सब रात को आते हैं. All demons attack in the night. But King Dasharatha is trying to say that, see, my son is like a lotus. Lotus is such a flower which blooms during the day, but as the sun sets, it also closes. So he's trying to say his eyes are like lotus, which will open when the day starts. But he's so small child. जैसा दिन पूरा होते होते उसका आंख भी बंद हो जाएगा और वो उस स्थिति में कैसा लड़ेगा? How can he fight? The eyes are closed. In due course of time, due course of the day, the evening comes close, and that time when this child is sleeping, how can he fight with those dangerous demons? So that is the hidden meaning by calling him Rajiva Lochana. Secondly, he is less than 16.
16 years. What does this mean? 16 years was an age limit set up. बोलते ना minimum आज election के लिए कितना है? Minimum 18 years, right? Once you become 18 years, you can get license, you can get elect voter ID card, you got the right to vote, then you are no longer a minor, you are a major. All those blah blah things are there. तो 18 साल का उम्र होते ही ये सब लागू हो जाता है, तो तब तक आपको बच्चा ही माना जाएगा. You will not be given license also. ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं. तो वैसे ही है, युद्ध लड़ने के लिए मिनिमम एज ब्रैकेट दैट टाइम वाज, it was not 8, 16, below 16. So you cannot fight. So how can you ask my young boy? Mind you, such young age, he is already expert in warfare. He's God himself, but he's, as a father, because of his love towards his son, he is not ready to accept. Please read the explanation. King Dashrata could simply not accept the proposal of sage Vishwamitra. King Dashrata specifically referred to Lord Rama as lotus-eyed, Rajiva Lochana. This means just as the lotus flower closes its petal at night, Rama also closed his lotus-like eyes and went to sleep like a small boy as night arrived. How could such a small boy ever fight with those demons who were more active in the night? Though King Dashrata had said that Rama was under 16 years old, Lord Rama was just around 12 years old. This is later confirmed by Maricha when he tells Ravana the age of 16 is quite significant, as it was the minimum age for a boy to enter the war. It is said at the time of marriage, Ramchandra ji was 12 years and Sita Maiya was 9 years. 9 साल की सीता मैया और 12 साल की रामचंद्र जी, उनका विवाह था अभी. So when I'll come there, that time I will discuss, we'll come to that point. इतना young age में बाल विवाह ये तब against the law है, ये वो है. We'll discuss at large what the Shastra has got to say. Why did the Shastra recommends marriage at a very young age or at an early age? So, yeah, you can continue, Mataji. We have discussed already the points which were mentioned in the purports. And of course, that Ramchandraji's age was just around 12 and 16 was quite far. So how can this young boy ever fight with such a small young age? Please continue. Here is a completely large army, Aksahuini, for which I am the controller and master. Accompanied with this army, I will engage in war with those demons who are more powerful in night. These warriors, who are my servants, are brave, powerful, and expert in weapons. They are fit to fight wars with many demons. It is not befitting of you to take Rama with you. So here Dasharatha Maharaj is now proposing an alternative plan. अरे भाई, आपको रामचंद्र जी अकेला क्या करे? बच्चा है, 12 साल का बच्चा है, वो क्या करेगा? आपको मैं पूरी एक अक्षोणी सेना देता हूँ. सेना देना के क्या बात है, मैं खुद ही चलता हूँ. I will engage in war with those demons. मैं खुद ही उस राक्षसों के साथ युद्ध लड़ूंगा. And not only that, those warriors who are coming with me in the army of one Akshoni Sena they are fit for, they are expert in weapons and are fit to fight wars with many demons. There is one important understanding we should have. Dasharatha Maharaj has been from the day one when he was a young teenager boy. He has been fighting wars with demons for the Devatas. So he himself is an expert warrior. And mind you, he is not some, Lallu Panju warrior. No, he is a great warrior. He is not to be taken lightly. And he is saying, I have already, my people are also strong. I am also strong. I'll come. What this one child will do? So many demons are there. All will be killed. Continue, Mataji. With the bow in my hand and leading the war, I will protect your sacrifice. As long as I hold my life till that time, I will fight those demons. So he's telling, I'll जान जाने तक मैं
युद्ध लड़के उन राक्षसों को मारूंगा. I will come there. Your sacrifice will continue without any obstacles. It is not proper for you to take Ram. See, there are Ram- two reasons we have to understand here. Dasharatha Maharaj's mind is only on one focus, whereas Vishwamitra Muni has come with multiple focus. Now, what is that one focus and multiple focus? One focus is Dasharatha Maharaj thinks ये सिर्फ उसको अपना यज्ञ बचाना है. He wants to save his sacrifice. उनका स्वार्थ के लिए आए. But Vishwamitra Muni has not come with that mood at all. He has come for something higher. His plan is something higher. And what is his plan? He wants to get Ram and Sita married. He wants to give him many various weapons like Bala, Ati Bala, and some secret celestial weapons. Divya Astra. वो सब देना है उनको. ये उनका प्लान है. उनको थोड़ी वो राक्षस को मारने के लिए थोड़ी लेके गए. But Dasharatha Maharaj is नहीं समझ रहे हैं. He is not able to understand. He thinks only you want to save your sacrifice. I will do the needful. So there is no need of taking Rama. I will come and protect your sacrifice. Why you want to take Rama for protecting your sacrifice? No need. That is the plan. Continue. Rama is still a child and has not fully learned the art of warfare. He does not know his strength and weakness, nor is he equipped with the power of weapons. He is certainly not fit to fight with those demons who fight deceitfully in the war. Separated from Rama, I cannot. Another one thing important point. Asuras are famous for not fighting a just war. What is a just war? एक अतिरथी दूसरे अतिरथी से झगड़ा करेगा. एक महारथी से लड़ेगा. So it is a just war. It's a balanced war. Fought under rules and regulations. कुछ कायदे कानून से युद्ध लड़े जाते हैं. ऐसा नहीं कि कोई भी उठा के कभी भी युद्ध लड़ेगा. Today you see modern warfare. There is no rules and regulations. It's all there on paper, but nothing is followed. They bomb hospitals, and hospital becomes a hiding place for the militants. So it's like there is no rules and regulations. Whereas in those days, wars were fought with the rules and regulations. But these demons, they used to be deceitful in their war. Means they were cheaters. They used to never follow the rules. They used to bypass the rules and fight the war. So he's saying he's too small a child. बहुत वो छोटा बच्चा है, वो युद्ध नहीं लड़ पाएगा. और वो भी चीटिंग वाला युद्ध तो बिल्कुल नहीं लड़ेगा. बेचारा वो सोचेगा मुझे आगे मारना है, वो पीछे से मार देंगे. They will hidingly kill him. They will hidingly attack him. So he said he cannot fight a deceitful war, cheating war. Yes. Separated from Rama, I cannot live even for a moment. O tiger among the sages, you should not take away Rama. In the earlier verses, King Dasharatha was explaining to sage Vishwamitra how his son Rama was a small child, just like a tender lotus. Now King Dasharatha is expressing his attachment to his son Rama. So there are two ways he is trying to give justification. एक तो उसने सोच लिया रामा को नहीं देना है, एक तो मुझे राम बहुत प्यारा है. तो पहला उसने क्या कारण बताया? जो बच्चा है, कुछ मालूम नहीं, 12 साल का है, he is not qualified to be a warrior and he cannot fight deceitful war and this and that. And now in this verse he is saying विप्रयुक्तो, I cannot stay separated. विप्रयुक्तो मतलब मैं उससे अलग नहीं हो सकता. And even for a मुहूर्त पे, एक क्षण के लिए भी मैं उससे दूर नहीं हो सकता हूँ. न उत्साहे, न cannot जीवितम मुनि शार्दुलः. ओ टाइगर अमंग ऋषिस, मैं एक क्षण के लिए भी जीवित नहीं रह सकता. Acharya say a very nice understanding over here. When Vasishtha Muni started teaching basic training, warfare training to Ram, Lakshman, Bharat and Shatrugna, point was Dasharatha Maharaj always wanted to monitor that. मतलब मेरे सामने सीखो.
और वशिष्ठ मुनि बोले सॉरी आपके सामने नहीं सिखाएंगे, कोई भी स्कूल में पेरेंट्स के सामने बच्चे को नहीं सिखा सकते, बच्चा सीखेगा नहीं. But he used to say, no, I'm very attached after so many years of doing tapasya, and finally after doing that Putra Kamishti Yagya, my son is born. How can I just hand it over? How can I be separated from my son? I cannot be separated from my son. That's true. It's written, even in Ramcharitmanas also it is written that Dasharatha Maharaj was not ready to separate himself from his sons even during the training period, even when they were being trained in for art of warfare. So here he is clearly mentioning that yes, I cannot be separate, live separately, even for a minute, separated from Ramchandra. Continue. O Brahmana, the one with the best vows, if you otherwise desire to take Rama along with you, then you must also take me and my entire army, consisting of its 4 divisions of elephants, chariots, cavalry, and infantry along with him. So from this you can understand how Dasharatha Maharaj is confused. पहले तो उन्होंने बोला बच्चा है, छोटा उम्र का है. देन ही सेइंग नहीं मैं उसको छोड़ नहीं सकता हूँ. देन ही सेज नहीं अभी इससे पंगा कौन लेगा विश्वामित्र मुनि से. ठीक है, इफ यू वांट टू टेक हिम, साथ में मैं और मेरा आर्मी फ्री है, हम लोग आएंगे. वी कैन नॉट बी सेपरेटेड, हम अलग से नहीं रहेंगे और आर्मी आगे जाए, मतलब रामचंद्र जी आगे जाएगा और आर्मी पीछे रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता. तो आवर आर्मी विल ऑल्सो फॉलो हिम. दिस बेसिकली describes the, what do you say, the confusion or the mental attachment and instability that Dasharatha Maharaj is not able to cope up with. Please continue. King Darshatha continued, O Kaushika, Vishwamitra, it is 60,000 years since my birth, and now with great difficulty I have got the son. It is not befitting for you to take Rama away. Here King Dasharatha explains how after 60,000 years at this old age he had received a son, that too with great difficulties. Hence he did not want to part away with his son. And the entire discussion, you see, Dasharatha Maharaj is speaking, but Vasishtha Muni is silently watching. उन्होंने मुंह खोला नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं बोला. देखो आगे क्या होता. Of the 4 sons of mine, indeed I have the most affection for my eldest son Rama, for whom righteousness is at the fore. It is not befitting for you to take Rama with you. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे चारों पुत्रों में से राम मुझे सबसे प्यारा है. Does that mean Dasharatha Maharaj would have sent Lakshmana, Bharata, Shatrugna, किसी और को भेज देते? बोलिए क्या लगता है, भेजते या नहीं भेजते? भेजते तो क्यों भेजते, नहीं भेजते तो क्यों नहीं भेजते? Come on, fast. I think nahi bhejte because anyways same reason कि they are small and मतलब छोटे हैं and वो attachment उनको बाकी के लोगों के साथ भी है ही ना, मतलब जैसे रामा के साथ है. No, there is no question of the other sons. Vishwamitra Muni has asked specifically for only Rama, not even Lakshmana. ये बात अलग है कि राम एंड लक्ष्मण आर inseparable, so लक्ष्मण वहां पे भी चला गया. But Rama, he was asked only for Rama. That's why he says, of the 4 sons of mine, indeed, I am most affectionate to my eldest son Rama, for whom righteousness is at the forefront. So what is the quality which Dasharatha Maharaj is attracted to of Ramchandra ji? Righteousness. So that doesn't mean Bharata, Lakshmana and Shatrugna are not righteous. They are also righteous. But he is the righteousness mein, he is in the forefront. And it is he who was, it was Ramchandra ji who was asked by Vishwamitra Muni, but he wanted to specify that चारों पुत्रों में सबसे प्रिय वो है, उसको मैं कैसे दे. That was the understanding. Go ahead. O best of the sages, how powerful are those demons? Whose sons are they? Who are they? What is their size and shape? Who is protecting all of them? O Brahmana, how can Rama or my army or myself fight those demons who are deceitful fighters?
So now he is inquiring about who are the enemy. अरे पहला पूछना चाहिए था ना, who are the enemies, किससे लड़ना है, क्या लड़ना है, कुछ नहीं. पहले बोल दिया नहीं बच्चा है नहीं लड़ेगा, आई एम वेरी मच अटैच टू हिम, नहीं लगेगा, अगर तुमको चाहिए तो मेरा आर्मी आएगा. ऑल ही सेड. एंड नाउ व्हाट इज ही आस्किंग? ओ बेस्ट ऑफ द सेजेस, हाउ पावरफुल आर दोस डेमन्स? वो राक्षस कितने पावरफुल है? Whose sons are they? किसके पुत्र है वो? मतलब उनका पूरा डिटेल्स. Who are they? What is their size and shape? कितने पावरफुल है, मतलब साइज एंड शेप मतलब कितने ताकतवर हैं, कितने बड़े योद्धा हैं. एंड हु इज प्रोटेक्टिंग ऑल ऑफ देम? उनका जो लीडर है, जो उनको बचा रहा है, वो कौन है? तो नाउ ही इज आस्किंग फॉर द एंटायर डिटेल्स. इतना देर फर्स्ट he said no no no, and now he is asking the details. And see further what he replies. And oh Brahmana, how can Rama, my or my army or myself? Now he has changed. Rama or my army or myself fight those demons who are deceitful fighters, as if he has never fought demons. So he's just finding out ways to avoid Vishwamitra. Continue. O great one, tell me, how can I stand against these wicked-natured demons in battle, who are proud of their prowess? After hearing those words, sage Vishwamitra replied, So now he's showing his despair. मैं कैसा लड़ूंगा, मैं खुद ही नहीं लड़ पाऊंगा, बच्चा तो कहाँ से लड़ेगा? I myself cannot fight. So now Vishwamitra puts a counter attack. बढ़िया बताते हैं, देखो. Sage Vishwamitra said, a demon named Ravana is born in the dynasty of sage Pulastya. By the boon given to him by Brahma, he is greatly troubling the three worlds. He is very powerful and of great prowess. He is surrounded by many demons. Sage Vishwamitra is answering the various questions asked by King Dasharatha in verse 12. फर्स्ट 12 में क्वेश्चन पूछा तो अभी सब जवाब तो देना पड़ेगा, सवाल पूछा तो जवाब देना पड़ेगा. बोलते सेज विश्वामित्र डेमन नेम्ड रावणा. अभी तक रावण का नाम नहीं बोला उसको. Because he asked now who is behind these demons, who is protecting these demons. अभी रावण का नाम है. देखो आगे. O King Dasharatha, it is so heard that Ravana is the supreme king of these demons. He is the brother of Kubera and son of sage Vishrava. This extremely powerful Ravana does not directly create obstacles in the sacrifice. However, instigated by him, the powerful demons Maricha and Subahu create many obstacles and disrupt the sacrifice. He is not saying Ravana is directly coming and troubling me. कौन trouble कर रहा है मुझे? मारीच and सुबाहु मुझे तकलीफ दे रहे हैं, रावण नहीं दे. Having thus spoken by that sage, King Dasharatha replied, it is certainly not possible even for me to stand in war against that evil-minded Ravana. Even by me, मुझसे भी. तो संग्रमे शक्तुम तस्य दुरात्मना. What does this mean? Sangrame means war. Shaktu means to stand or to fight. Tasya, that Ravana, दुरात्मा, बुरा इंसान, उससे मैं भी नहीं लड़ सकता हूँ. तो यहाँ पे he is trying to again emphasize, जब मैं ही नहीं लड़ सकता हूँ तो रामचंद्र जी छोटा सा बच्चा 10 साल 12 साल वाला बच्चा वो कैसे लड़ेगा? So you rule it out. Continue. O righteous one, only a great person like you can shower your mercy on my sons and on me, who is less fortunate. O great Vishwamitra, a spiritual teacher, Guru, like you is indeed like God to me. So now he is trying to say, Baba, you are like God to me. But you only have to say no. I cannot say no. तो मैं ना बोलेगा तो आप श्राप दे देंगे. तो आप बोलो, ना बोलो, मगर आप बोला. It is not. See, O righteous one, only a great sage like you can shower your mercy upon me, and on my son and upon me, who is less fortunate. O great Vishwamitra, spiritual leader, you indeed are like God to me. आप भगवान जैसे हो. आप कैसे मेरे भगवान कभी किसी का बुरा करता है क्या? दुश्मन कर सकता है, भगवान किसी का बुरा नहीं करता है. Saying you are like God to me. आप मेरा बुरा क्यों कर रहे हो? Continue. It is not possible even for the Devatas
demons, celestial Gandharvas, yakshas, or even birds and serpents to withstand Ravana in war. Then what to speak of humans? यहाँ पे एक पॉइंट सही बोल दिया उन्होंने। भाई जब देवता लोग ही रावण को कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो मेरा बच्चा, छोटा सा 12 साल का बच्चा, वो क्या करेगा? So don't expect that we humans can ever fight Ravana Ravana when all devatas have failed to control him. Yes. That Ravana takes away the powers of even the most powerful in war. O best of the sages, it is not possible to fight with him and his army, by me or my army or by my son. My son may look सीधा like सीधा an ना बोल दिया उसने। My son may look like an immortal personality, but he is still a child and not an expert in war. O Brahmana, whatever it may be, I will never give my son. The two sons of Sund and Upasuni, Maricha and Subahu, who are creating obstacles in your sacrifice, are death personified. Certainly, I will not give my son to you. बार बार एक ही बोल रहा है, certainly I will not give my son. Finally, the king said, Maricha and Subahu are very powerful and well trained in treacherous warfare. Either I will go to war with them, with my well-wishers, or else persuade you, along with my friends and relatives, to spare Ram. तो या तो मैं चलूंगा वॉर में जाके युद्ध लड़ूंगा, या तो मैं बोलूंगा सब मेरे सभी साथी जनों को कि भाई आप राम को छोड़ दो। Thus, in this manner, when the great king contradicted that best of the sages, great anger entered the son of Kaushika. Sage Vishwamitra's anger was like a blaze of fire which arises when clarified butter is poured in the sacrificial fire. जैसे जैसे घी में घी सॉरी अग्नि में घी डालते हैं और अग्नि कैसा भड़कता है, वैसा विश्वामित्र मुनि का ऐसा भी वो बहुत गुस्से वाले हैं. He has become more angry. So we'll take the next chapter. Here is the turning point of this entire discussion. Vashishta's advice. Yes. Having heard the king's words, which were filled with affection for his son, sage Vishwamitra in great anger spoke to King Dasharatha. After promising me earlier to fulfill my desire, now you are breaking your vow. It is not proper for one in the dynasty of Raghu to break promises after making them. पहला चीज उन्होंने क्या बोला? Well, you have made promise. And who are you? You have made a promise from the Raghukul. You are coming from the Raghukul. And we all know the story. Raghukul reached सदाचरी आई, प्राण जाए पर वचन न जाए. और ऐसा करने के बाद आप अभी वचन तोड़ रहे हो. You're breaking your promise. It is not befitting you. रघुकुल का एक रीत होके भी आप कर रहे हो, गलत. Continue. If this is appropriate to you, O king, then I shall go back as I had come. O descendant of Kukusta, for all the false promises which you made to me, be happy with your relatives. Explanation. Very important statement is made by Vishwamitra Muni in this shloka. मिथ्य प्रतिज्ञा मतलब false promise. मिथ्या means गलत, false, and प्रतिज्ञा means vow or promise. मिथ्य प्रतिज्ञा ककुस्थ सुखी भव सबांधवा. Along with your relatives, be happy. क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? आशीर्वाद दिया, क्या हुआ? इसका मतलब क्या? एक तो तुमने मिथ्या प्रतिज्ञा की, मतलब गलत प्रतिज्ञा या झूठा प्रतिज्ञा किया है, वाव किया है. एंड अब उसके बाद भी वो ककुस्ता, वो दशरथा, वो डिसेंडेंट ऑफ ककुस्ता डायनेस्टी, सुखी भव सब बांधवा, अपने लोगों के साथ सुखी रहे. व्हाट डज दिस मीन? Come on. It's important to be understood. Understand this. Very important.
which he indirectly is saying that you will not be happy. Yes, perfect. वो भी कैसा बोल रहा है, स बांधवा, मतलब वो भी भरेगा तेरा स बांधवा, तेरे दोस्त रिश्तेदार सब वो भी बर्बाद हो जाएंगे। यहाँ पे सुखी भव मतलब क्या, जा नहीं दिया ना, जा सुखी रहे। That means indirectly he was showing his, expressing his anger and discomfort. Because first he had promised, I will give. And first and foremost, Vishwamitra Muni would never come and ask for anything, something, silly. He had come with a pure blood plan. He was a big, after all, a Maharishi now. He was once a king, now a Maharishi. So he is saying, to pehla promise kiya, and then you have, so it is not appropriate. So you be suki raho. And wo bol ke, then see, read ahead, read the explanation. How can one who makes false promise ever be happy with his relatives? If one makes false promise, he will be doomed and his entire dynasty will lose its reputation. These words sounded very much like a curse. As sage Vishwamitra was a Brahma Rishi, he was not in a mood to curse King Dashratha, but was very annoyed. When a Brahmana is displeased after asking something from a king, it is bad for both the king and his kingdom. Yes. मैं हमेशा कहता हूँ, कोई याचक मांगने आए और आप वहां बिना दिए आप रहते हो, है आपके पास, तो बड़ी चीज नहीं है और आप दे सकते हो खुशी खुशी। एंड ये राजा लोग तो, ये हरिश्चंद्र जी का वंशज है ना, रामचंद्र जी का वंश में ही तो राजा हरिश्चंद्र हुए, अपना राजपाट तक दान कर दिया था। एंड रघु राजा, रघु, ऑल एक से एक बढ़िया, किंग सगर, all these rajas of great personalities. ये लोग ने इतना प्रॉमिस करने के बाद, मतलब उस वंश में इतना करने के बाद, एक बार उन्होंने प्रॉमिस किया तो उसको पूरा किया। क्यों? उसके पीछे कारण क्या है? तो लोगों को नेम फेम चाहिए था कि भाई हाँ, हम लोग जहाँ है वहाँ नेम फेम होगा। व्हाट वाज द रीजन व्हाई दे वर फेमस फॉर फुलफिलिंग देयर वॉव्स? Yes, Chandrakant, what do you think? What could be the reason? Because they were following dharma, like they wanted to stick to dharma, Okay, righteousness. Yeah, fine. because Something more. Being a king, they used to. Huh? Being a king, हाँ. मतलब, they used to fulfill their promises. मतलब others, they is considered, मतलब they are the other. Close, you're close, but you're not correct. Yes, Apekshit, want to try? और लीडिंग बाय एग्जांपल, जैसा जैसा राजा रहेगा वैसी उसकी प्रजा भी ना। अच्छी रहेगी। Come on, the answer is very close to Puja Mataji's and Chandrakant's answer, but not perfect, not correct. थोड़ा नजदीक। याद रखो, 3 कार्य है राजा का। पहला चीज, प्रजा की रक्षा करना। So is it not his duty to protect his Vishwamitra Muni who comes under his kingdom? बराबर ना, राजा should protect, right? How can he deny I will not protect? 2, second important point. When he has specifically asked for something, the king has to give when a sage asks. If he doesn't fulfill that desire, his entire bunch, his entire reputation, everything is lost. I told you n number of times why Sita Maiya came out. As per Ramcharitmanas, there is a Lakshman Rekha. वाल्मीकि रामायण में नहीं है लक्ष्मण रेखा। तो लक्ष्मण रेखा पार करके बाहर क्यों गई? उसने क्या बोला? रावण ने साधु बन के आया था, बोला नहीं मैं अंदर नहीं आऊंगा, तुमको आके बाहर देना पड़ेगा। फिर अग्रीमेंट हुआ, आइए आइए आप आइए, नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा। और ये नहीं, वो लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं कर सकता।
So that's why what she did, अगर मैंने नहीं दिया, बिना दान लिए अगर ब्राह्मण चला जाता है, तो अब उसके घर का पुण्य, उसके पति के सारे पुण्य लेके चला जाता। इस डर से वो बाहर आई लक्ष्मण रेखा के बाहर, और फिर उसका अपहरण हुआ. दिस इज एज पर रामचरित. Coming back to this topic, please understand that it is a sin for a king for not fulfilling the desires and wishes of the sages, especially the sages, Brahmanas. Their wishes have to be fulfilled. First, as I told you, it is duty to protect them. And third, the most important, after having given him a promise above, बोल दिया ना उसको. ये दशरथ महाराज कई बार करते हैं. अयोध्या कांड में भी यही प्रॉब्लम है. वो पहले कैकेयी को बोल देते हैं, हाँ सारे देवताओं को कसम, तू जो बोलेगी मैं तुझे दूंगा. बस खत्म. कैकेयी तुरंत बोलती है, ठीक है अभी रामचंद्र जी को वनवास में भेज दो. अगर वो नहीं भेजते हैं तो रामचंद्र जी को पाप लगेगा. इसके लिए वो मजबूर. मैं बेटे का सौगंध लेके कहता हूं कि तुम जो चाहोगी मैं, तुम जो मांगोगी मैं दूंगा. इसका रामचंद्र जी का कसम लेके. अभी उसने बोला रामचंद्र जी को भेज दो. अब रामचंद्र जी का कसम लिया है, he cannot break the promise also. ये हम लोगों के लिए भी सीख है कि कोई भी चीज का वादा करने के पहले 2 बार सोच. Blindly we should never declare our so to say our promise, or we should declare, yes you will get, I will give, I will do it. Don't say that. Be quiet. Quietly accept what is the situation. First assess the situation and then give your commitment. Till then don't give your commitment. Yes Mataji. As the wise Vishwamitra was fuming with anger, the entire earth was shaking, and the Devtas were gripped with fear. See, please understand, Vishwamitra is also a part of the entire story or game. Just imagine. ठीक है, मैंने तो कई बार बोला है कि रामचंद्र जी का अवतरण ही सीता मैया से शादी करने के लिए हुआ था. मैंने कई बार वो कहानी तो बता दी है आप लोग. अगर शादी ही नहीं होती तो रामायण कैसा हो? इसको किडनैप करता था रावण. What would have been the face of the entire Ramayana? Would have been totally different, right? Can you imagine Ramayana without Sita? Not possible. तो वहां देवता से ग्रिप फियर, अरे अभी नहीं भेजेगा, वो नहीं भेजेगा तो बल अति बल नहीं होगा, मतलब दे नहीं पाएगा विश्वामित्र मुनि रामचंद्र जी को. एंड देन उसका बल अति बल देने के अलावा आगे जाके उसको अहिल्या का उद्धार करना है, आगे जाके उनको सीता से लग्न विवाह करना है. पूरा स्टोरी अपसेट हो रहा है. One character Dashrath is coming and stopping the entire flow of the events which are going to happen. So what happened? Vishwamitra was fuming with anger. The entire earth was shaking. इतना गुस्सा, विश्वामित्र मुनि कुछ भी करेंगे. The earth was shaking and the devatas were gripped with fear. Next verse. The entire world was frightened by the anger of the great sage Vishwamitra. Knowing this very well, the good, vowed, and the steadfast Vashishta Muni spoke to the king. इतना देर वशिष्ठ मुनि ने मुंह नहीं खोला. He was quiet. He was Vashishta quiet. Muni, 1 minute. He was quiet. But now when he saw situation is going out of hand, I have to give my advice. Because the biggest problem was Vishwamitra Muni is saying no. No means the entire story is going, the flow of the events are going to stop. Secondly, Vashishta Muni had eyes of knowledge. He knew who Vishwamitra Muni was. He knew the capacity of Ramchandra ji as God. How did Vashishta Muni know that Ramchandra ji is God?
गुरुजी ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया था ना कि मतलब वहां पे हाँ मतलब गुरु बन के जाना है, मतलब वहां पे लाइन। यस, बहुत छोटा छोटा पदवी लिया उन्होंने, उनके उनके लेवल के हिसाब से उन्होंने बहुत छोटा पदवी लिया। ब्रह्मा जी ने बोला जा जा तू इसका घर पे कुल पुरोहित बन जा, फैमिली गुरु बन जा, तो नौकर ही बन जा ना। कुल गुरु बोला तो क्या नौकर ही है ना। बोला मैं नहीं जाऊंगा, मेरे को कभी नौकर नहीं बनना। अरे कभी कौन से काल में, बहुत पहले बन गए थे, एटलीस्ट 4-5 राजा के पहले वो कुल गुरु बन गए थे। मगर उन्होंने बोला नहीं नहीं देखो, वहां पे रामचंद्र जी जन्म लेने वाले, उस कुल में रामचंद्र जी जन्म लेने वाले हैं, सो आप वहां का गुरु बन जाओ तो आपको उनका सेवा करने मिलेगा। So he had taken up this. So he knew that Ramchandra ji is none other than God. Father, out of love for his son, could not see God or godly qualities in Ramchandra ji. Though he mentioned one line in this, अभी तक आपने पढ़ा तो याद होगा, though he may appear immortal, I cannot give Ramchandra ji. And last but not the least, when Lord came as कृष्णा, कृष्ण अवतार में आए थे, तभी भी यही खेल चला। जब भी बाल बाल आके या वृंदावन वासी आके बोले ना कि भाई आपका बेटा तो महान है, बोलेगा नहीं 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 नहीं, उस पर तो कोई काला जादू हो गया कुछ तो। जब उसने शक्टासुर को मारा एक की लात में, शक्टा मीन्स पाट, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी को शक्ट बोलते हैं, तो शक्ट को लात मार दिया, पूरा तोड़ ताड़ के गिर गया, पूरा शक्ट विध्वंस हो गया। तो बोले नहीं नहीं, कोई लगता है कोई भूत प्रेत का साया है, पूरी बुरी छाई के साया है उसको। जब पूतना को मार दिया, बोले अरे मेरा पूतना देखो, मेरा बच्चा देखो पूतने के ऊपर बैठा है, मरी पड़ी हुई है पूतना, और उसका पूरा प्राण ले लिया उसने, अपने स्तन से प्राण ले लिया। तो एवरी टाइम व्हेन एनीथिंग इज टू हैपन, द बेस्ट इज व्हेन कालिया नाग के ऊपर कृष्ण नाच रहे थे। 2 बार तो यशोदा मैया बेहोश होकर गिरी। जैसे उसने देखा कि नाग पे नाच रहा है, अब क्या बचेगा, ये वो भी कालिया नाग पे नाच रहा है, शी फेल डाउन अनकॉन्शियस। Then when Govardhan Hill was lifted, सभी ग्वाल बाल आए, सभी गांव वाले आए, आपका पुत्र बहुत ही बड़ा, नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, बड़ा भगवान है, कुछ तो है, कुछ तो स्पेशल है। अरे नहीं नहीं, क्या कुछ नहीं, घर घर में जाके चोरी करता है, सबके माँ बाप आके मुझे कंप्लेंट करते हैं कि वहां जाके मक्खन चोरी करता है, भगवान तभी चोरी करेगा क्या? वो भगवान नहीं है, वो भगवान। और फिर उसी दिन रात को जब सांप निकल जाता है, बड़ा अजगर नंद बाबा को निकल जाता है, तब कृष्ण जाके उनको बचा। सो एज पेरेंट्स, बिकॉज ऑफ द लव एंड अफेक्शन, they could never accept their son, be it be Krishna or be it be Rama, as God. And there is a reason behind the Brahma Vimohan Leela. Sorry, not Brahma, the Brahmand Ghat, where the entire Brahmand was seen in his mouth. Krishna, Yashoda Maiya saw the entire Brahmand. वो चकरा के गिर गई। अगेन शी फील अनकॉन्शियस, ऐसा कैसा हो गया, मेरे बेटे को कोई भूत प्रेत पकड़ लिया। They can see only, as the child is very innocent, powerless, and something, any external force is troubling my child is innocent. And Krishna has to keep that covered. उन्होंने ब्रह्मांड दिखा दिया, बट फिर वापस उनका बोलते हैं ना मेमोरी इरेज कर दिया। क्यों? अगर नंद बाबा या यशोदा मैया या कौशल्या, दशरथ महाराज, इन लोगों को पता चले कि हमारा पुत्र भगवान है, क्या उनके साथ वही प्रेम भरा संबंध रहेगा? Will they have that same interaction of love and affection which they have once they come to know that their son is God? They will see, अरे गॉड आया है भाई, बड़ा आदमी है, वो उसको प्रणाम करेंगे। थोड़ी बेटा बोल के बेटा जाके पापा को प्रणाम करेगा, बाप बेटा को प्रणाम करेगा।
That is why you see in Guruvayur, the Murti which is worshipped is the same Murti which was worshipped by Devaki. When she had seen her son in the 400 form in the jail. जब देवकी जन्म लिया ना, मतलब उस दिन जब प्रकट हुए तब चतुर्भुज रूप में थे। तो जब चतुर्भुज रूप में थे तो भगवान पहले चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, तो उन्होंने बोला अरे इतना बड़ा नहीं, अब छोटे हो जाओ, तो छोटे चतुर्भुज रूप में आ गए। First he came as a big 400 form, then he came to small 400. और उस भाव, वो चेहरा उसके दिमाग में ऐसा बैठ गया देवकी के आंखों में कि वो छवि बैठ गई। Then she saying, no, now you become normal, यार, don't have 400 form. Then he became 200 child, small, टोकरी, खुद भी बना लिया टोकरी, उसी पे बैठ गए, छोटा सा बालक बन गए। That time he didn't have 4 hands, he had only 2 hands. So that very विग्रह, that छवि जो उनके दिमाग में बैठ गई थी, उसी का विग्रह बनाया, और जब तक प्रलय नहीं हुआ तब तक देवकी उस विग्रह को रख के, द्वारका तक रख के उसका पूजा करती, उसको निहारती थी। एंड जब प्रलय हुआ, मतलब जब कृष्ण का लीला खत्म हुआ, तब नदी, मतलब समुद्र से बहते हुए कहाँ आया? गुरुवायूर में। गुरु और वायु दोनों ने जाके उस विग्रह का वहां पे स्थापना किया, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी शिव जी थे, और शिव जी को हटाकर बगल में ममयूर बोल के एक छोटा सा गांव है, बगल में ही, वेरी क्लोज, वहां पे शिव जी चले गए, और यहाँ पे गुरुवायूर ने कृष्ण का स्थापना किया। इसके लिए आज भी आप जाके देखो, गुरुवायूर में कृष्ण का चतुर्भुज रूप है, नारायण रूप है, बट बाल स्वरूप में है, छोटे से बालक के स्वरूप, जो स्वरूप में देवकी ने भगवान को देखा था वही। So what does this mean? Parents can never accept their child as something great. As long as they accept their child, or they see their child as a helpless person, and as if they are taking care of the child, they are feeding the child, they take great pleasure, and Lord comes for this interaction of bhava. We always say, there are various rasa bhava, Vatsalya bhav, then Madhuri bhav, Shakhya bhav, Dasya bhav, all this various bhav. So Gwalbals were having Sakhya bhav, कोई दास्य भाव में थे, तो अपने उद्धव जी दास्य भाव में थे, अर्जुन दास्य भाव में था। वैसे ही आप रामचंद्र जी की लीला हो या कृष्ण जी का लीला हो, कृष्ण जी का लीला में और रामचंद्र जी की लीला में सबसे बड़ा अंतर क्या है? What is the striking difference you will find between both Krishna Leela and Ram Leela? What is the difference? Fast. Any childhood interactions with the devotee? Okay. Something more? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, और राम जी ने उनके भगवान होने का, यानी भगवान है वो, उसका रिविलेशन नहीं किए थे ज्यादा, पर कृष्ण लीला में बार बार करते थे। बट इवन दो पब्लिक, यानी उनके जो भी सखा थे वो रियल, पर उनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं था, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन था उनके ऊपर। he had to be confined in a human role, whereas in Krishna Leela from the day one he was born, तभी से वो अपना भगवान का स्वरूप दिखाए, चतुर्भुज रूप दिखाए। फिर रात को जेल का दरवाजा खोले, पानी क्रॉस करके गए पिताजी, could cross because of him only। फिर वहां से योग माया, और ये सब इंस्ट्रक्शन दिया था कृष्ण ने, और वहां का बच्चा लेके आओ, मुझे वहां छोड़ो, वो लोग ने सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो किया। फिर दूसरा दिन ही पूतना को मार दिया, हाँ, एक हफ्ते के अंदर शक्टासुर को मारा, चालू एक एक करके सब राक्षस को मार रहे, विदाउट हाइडिंग और कैमोफ्लेजिंग हिज पावर्स। ये बात अलग है कि योग माया वाज ट्राइंग टू कवर हिज what is it, extraordinary acts in front of the eyes of his Gwalbal, his parents and everything. They used to feel, अरे रे हमारे बच्चे पे बुरा साया हो गया, कोई भूत प्रेत ने पकड़ लिया, ये हो गया वो हो गया। But actually that was Krishna's Yoga Maya which was covering him.
But actually he had no restriction. But poor fellow Ramchandra ji, पूरा life he could not display that he is God. Human form में है. रावण को मारने के बाद भी he could not display that he is God. तो पूरा incarnation was compulsion. Human form human नहीं मार सकता है. ये तो रावण आके पूछेगा, अरे मेरे मारने के बाद आप तो अपने आप भगवान स्वरूप दिखा रहे हो. चीटिंग वो झगड़ा करेगा. So he was forced to be under the constraint of human-like activities. Whereas Krishna, he was not at all forced. From the day one, he was free to act as a God and display all his opulences and power. ये तो छोटा बच्चा गोवर्धन उठा रहा है, ये बात अलग है. सारे गोवर्धन वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं. इसके लिए इंद्र ने आके उसका पैर छुआ, ब्रह्मा जी ने उसके पैर छुए, सब लोग ने माफी मांगी, सब लोगों ने नाक रगड़ा. ग्वाल बाल कभी लड़े, कभी रगड़े, कभी माना अरे तू भगवान है, अरे रहेगा तू भगवान, तो अभी तो हमारा तो सखा है, तो हमारे साथ दोस्ती. इनफैक्ट एक बार जब वरुण लोक तक चले गए थे, तब कृष्ण अपना ग्वाल बाल बोले, हमको पता है तू भगवान है, हमको तेरा लोक में लेके जा. भगवान बोले नहीं रहने दो, इधर ही अच्छा है, वहां जाके बोर हो जाओगे. नहीं एक बार लेके चलो. ठीक, भगवान लेके गए वैकुंठ में. और वैकुंठ में जाते ही भगवान इधर दूर बड़े शेषनाग के ऊपर बैठे हुए, सब लोग उधर हाथ जोड़े हुए. ऐसा कोई खेल वेल नहीं कर रहे हैं जैसे ग्वाल बाल जैसे यहाँ वृंदावन में खेल रहे थे, कुश्ती लड़ना, एक दूसरे का खाना छीन के खाना एंड ऑल दैट. नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. एकदम ऑ एंड रेवरेंस. सिस्टम से बैठे हैं, सिस्टम से कर रहे हैं सब कुछ. सब लोगों ने देखा, अच्छा मिलना है भगवान को, ऐसा आप मिल नहीं सकते हो, यू टू गो थ्रू ए चैनल, वहां से अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, फिर भगवान आपको दर्शन देंगे और आपको सिर्फ प्रणाम करना है. तो सब ग्वाल बाल ने देखा, छोड़ कृष्णा जाते हैं यहाँ से, बोर हो गए. अपना वृंदावन ही सही है, वहां अपना आपस में कुश्ती लड़ना और खेलना यही अच्छा है. सुबह से उठ के खेलने लगते थे, रात तक कोई पूछता नहीं था. वहां धमकी देते थे कृष्ण को, खेलते खेलते तो कृष्ण को यशोदा मैया बुलाएगी, आजा आजा घर पे आजा, खाना खाने आजा. कृष्ण बोलता था मैं खाना खा के आता हूँ, भूख लगा है. सब तुरंत दोस्त बोलते हैं, देख अभी तू गया ना, तुझे बाद में खेलने में नहीं लेंगे हम लोग, तुझे वापस तुझे खेल में नहीं लेंगे. कृष्ण, हाँ मैं नहीं आ सकता हूँ अभी, मैं तो मुझे खेलने नहीं देंगे. कौन? भगवान बोल रहा है. और ये ग्वाल बाल भी किसको बोल रहे हैं? भगवान को. That bhava he can enjoy only in this world, he cannot enjoy in Vaikuntha. So sab bhav ka khel. So with this we like to close today's session. We'll continue next week. Jai Shri Ram.